ठीक है, right. So we are going to study what the plant hormones are and how they are going to function. These plant hormones, they are not produced in special organs like in animals. ठीक है, animals के अंदर we have special organs, but in plants we do not have any kind of specific sites where they are going to be produced. Generally they are produced in the plant body, and the impact of these hormones, a very very important concept आपको दे रही हूँ. The impact of these hormones, it strictly depends upon the ratios. ठीक है, it strictly depends upon the ratios in which they are present. Some hormones will be stimulatory in high amount in one area, and the same concentration will be inhibitory in another region. ठीक है, तो इट डिपेंड्स के आपके पास जो है वो किस एरिया में कौन सा कंसंट्रेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो अब आपके पास जो प्लांट हार्मोन्स हैं, वी हैव 5 ग्रुप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, एंड प्लांट हार्मोन्स व्हाट डू दे डू, वी हैव दे एग्जिस्ट जो है ना इन द प्लांट, बट व्हाट इज हैपनिंग के वी डू नॉट हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट हार्मोन्स. I have shared an image with you people in which I have shared the structures of the plant hormones with you people, okay, and a general study in the plant hormones. The most important plant hormone that we have is auxin, IAA, indole acetic acid. It is also known as indole acetic acid, IAA. This is auxin. This is a plant जो है वो stimulatory hormone. It helps in the growth of the various regions of the plant. Then we have, and especially auxin, it promotes the stem elongation, it promotes the growth of the vascular tissue, and then it plays a role in apical dominance, जो कि हम लोगों ने अभी जिसको हमने अभी complete किया है. This is what happens in the role of the auxins. Now, where is auxin produced in the plant? Look at the screen that I have, look at the image that I have shared with you people. I am reading the image. ठीक है, where are auxins produced in the plant? They are produced in the shoot apical meristem. Very very specific. प्राइमरी मेरिस्टेम में बन रहा है, एंड प्राइमरी मेरिस्टेम में किधर बन रहा है? इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम. इन द एपिकल मेरिस्टेम दैट इज प्रेजेंट इन द शूट रीजन. ठीक है, वहां पर आपके पास IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सिन्स बन रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन ऑफ प्लांट्स. ठीक है, मेजर फंक्शन क्या है? लिखते जाइए. मेजर फंक्शन इज स्टेम इलोंगेशन, प्रमोशन ऑफ वैस्कुलर टिश्यू ग्रोथ. वैस्कुलर टिश्यू ग्रोथ क्या है? वैस्कुलर बंडल्स की जो सेकेंडरी थिकनिंग है, and then suppression of the lateral buds, intercalary meristems की एक्टिविटी को थोड़ा सा यहाँ पर it is going to suppress. Now the second growth hormone which is going to promote growth, which is stimulatory in nature, is the cytokinin. ठीक है, cytokinin. ठीक है, this is the second one. ठीक है, cytokinin along with, now very important concept, write it down beta, cytokinin along with auxins. ठीक है, cytokinin auxins के साथ they are going to work together with auxin, and they will help in the cell division phases of various parts of the plant, development and differentiation of cells. Cytokinin works with auxin and helps in the stimulation of cell division in various parts of the plant, like in the lateral branches also, because a specific जो है वो concentration is going to be acquired between cytokinin and auxin. It is going to help in the differentiation of the cells, and it is also going to help in the development of the cell. Cytokinin plus auxin together. Cytokinin कहाँ बनता है? Very very clearly याद रखें, cytokinin is produced in the roots, and it is transported from the roots to the different parts of the plant. And through which tissue is it going to be transported? Question पूछा है. From which tissue is cytokinin going to be transported to different parts of the plant? Is it the xylem tissue or is it the phloem tissue? Give me an answer quickly. इसका आंसर मुझे दे दीजिए. मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जिब्रेलिन्स हैं. जिब्रेलिन्स आर अनदर ग्रुप ऑफ हार्मोन्स व्हिच आर स्टिमुलेटरी इन नेचर. ठीक है,
साइटोकाइनिन्स एंड हॉर्मोन्स किस ट्रांसपोर्ट टिश्यू में से ट्रांसपोर्ट होंगे, जाइलम टिश्यू में या फ्लोएम टिश्यू में? जल्दी से मुझे आंसर बताएं। मैंने जब आप लोगों को ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था तो आई टोल्ड यू पीपल वेरी क्लियरली कि जो ये मटेरियल्स हैं ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आई नीड अ वेरी प्रॉपर आंसर फ्रॉम यू पीपल, गिव मी अ वेरी क्विक आंसर। कौन सी टिश्यू इनको हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करेगी, जल्दी बताएं। हमारी बॉडी में तो ब्लड टिश्यू इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट द हॉर्मोन्स, बट व्हाट इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट द हॉर्मोन्स इन द प्लांट बॉडी? गिव मी आंसर्स। नेक्स्ट प्रोमोटरी जो आपका हार्मोन है दैट इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है? This is also having a positive impact. Gibberellin has a positive impact also. Gibberellin क्या करता है? Gibberellin is denoted as GA. ठीक है, इसको GA1 के तौर पर हम डिनोट करते हैं एंड इसमें मैं ब्रैकेट में इसको कर देती हूँ। ओके, तो जिब्रेलिन में आपके पास क्या है, क्या हो गया? चलिए, जिब्रेलिन में आपके पास क्या है कि आपके पास जो है ना इट इज डिनोटेड एज GA एंड आपके पास जो जिब्रेलिन जो है दिस इज आल्सो अ प्रोमोटरी एंजाइम, इट इज नॉट इनहिबिटरी इन नेचर। आंसर नहीं आया अभी तक मेरे क्वेश्चन का, ठीक है? क्या हो गया है? आंसर दे मेरे क्वेश्चन का, मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को, आप लोग मुझे खुद आंसर देंगे जी। यस बेटा, वेरी करेक्ट आंसर। ओनली एक बंदे ने आंसर दिया है, ठीक आंसर दिया और इतनी देर के बाद आंसर दिया है मुझे, ठीक है? यस बेटा, ठीक है। यस, दिस इज अ फ्लोएम टिश्यू। Hormones are transported by the phloem and by plasmodesmata from cell to cell. Yes, it is through the mainly through the phloem tissue. Shabash. Cytokinins, auxins, and gibberellins, these are promotory enzymes. They help in the growth. Cytokinins के बाद अब जिब्रेलिन्स हैं। Where are the major functions of gibberellins? Write it down. The major, ये आपको बहुत आसान करके बता रही हूँ, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है? Gibberellins are produced in the stem and the internode, elongation, mobilization of enzymes and during the seed germination. ठीक है? कब जिब्रेलिन्स बनते हैं आपके पास? जिब्रेलिन्स are produced in the stem, generally in the stem of the plant. लिख देती हूँ, ठीक है? Generally they are produced in the stem of the plant. Then they are produced in during the internode elongation. जब इंटरनोड इलोंगेशन होती है, इंटरनोड क्या है? इंटरनोड द स्पेस बिटवीन टू लेटरल ब्रांचेस, द स्पेस बिटवीन टू लेटरल ब्रांचेस इज नोन एज द इंटरनोड, ठीक है? दिस ड्यूरिंग द इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड जिब्रेलिन प्रोड्यूस होता है। ड्यूरिंग द स्टेम इलोंगेशन जिब्रेलिन इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। ड्यूरिंग द मोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स ड्यूरिंग सेल सीड जर्मिनेशन, जब आपके पास ड्रॉ करती हूँ, जब आपके पास एक सीड है, ये हमारे पास एक सीड है, इस सीड में से ये प्लांट निकलना है, ठीक है? ये छोटा सा हमारे पास एक एपिकोटाइल जो है ना और हाइपोकोटाइल हमारे पास जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, शूट बन रही है, प्राइमरी शूट बन रही है, ठीक है? नाउ इसके अंदर various kinds of hormones have to be produced, various kinds of enzymes have to be produced. These enzymes that are produced here, which are going to help the growth of the seedling, these enzymes are mobilized by the presence of gibberellin. It is gibberellins which is going to mobilize these enzymes when during seed germination. Gibberellin का क्या function है? Number 1, stem elongation. Number 2, stem elongation का मतलब इसकी length को increase करना। ये तो माइटोसिस कर रहा है ना, इसकी लेंथ को इंक्रीज करना, रूट नहीं। फिर इंटरनोड इलोंगेशन, ये डिस्टेंस बिटवीन द, अब देखिए यहाँ पर इंटरनोड में डिस्टेंस नहीं है, ठीक है? फिर mobilization of enzymes during seed germination. Of these are 3 growth promoting enzymes: indole acetic acid, auxins, cytokinins, and stem अपना and gibberellins. कहाँ पर बनते हैं जिब्रेलिन्स? जिब्रेलिन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एपिकल पोर्शंस ऑफ द रूट्स एंड द शूट्स। एपिकल मेरिस्टेम्स हैं, बोथ द रूट एंड द शूट एपिकल मेरिस्टेम में जिब्रेलिन्स आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड, बोथ द रूट एंड द शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है? ऑक्सिन ओनली एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द शूट है, जिब्रेलिन एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द शूट एंड द रूट में दोनों में प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट जो है जनाब हम जो कर रहे हैं वो क्या है? These are the hormones which have the inhibitory effect.
ठीक है, क्लास को 5 मिनट के लिए आप लोग ज्वाइन करेंगे दोबारा से। इनहिबिटरी इफेक्ट है। इनहिबिटरी इफेक्ट में क्या है? इनहिबिटरी इफेक्ट में आपके पास हैं 2 हार्मोन्स, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। इथाइलिन क्या है? इथाइलिन कंट्रोल्स ऑफ एब्सिशन ऑफ लीव्स, flowers, fruits, retardation of lateral bud elongation, hastening of fruit ripening. इथाइलिन आसान करके बताती हूँ, लेटरल बड्स की ग्रोथ को स्टॉप करता है, फ्रूट राइपनिंग को जो है वो प्रमोट करता है। ठीक है, इथाइलिन इट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग, इट स्टॉप्स जो है वो लेटरल बड फॉर्मेशन, it controls the fall of leaves and flowers during the autumn seasons. ठीक है, लीव्स एंड फ्लावर्स की फॉल को ड्यूरिंग ऑटम को थोड़ा सा कंट्रोल करता है, फ्रूट्स के फॉल को थोड़ा सा कंट्रोल करता है until the fruit becomes ripe. इसका पूरा मैकेनिज्म आपको मैं बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने कितना इसका एक प्यारा सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है। ये मैं आपको बताती हूँ कि इथाइलिन का इम्पैक्ट कैसे आता है। ठीक है, कहां पर बनता है? इट इज प्रोड्यूस इन द लीव्स, इट इज प्रोड्यूस इन द स्टेम्स, इट इज प्रोड्यूस इन यंग लीव फ्रूट्स। दोबारा से देखिए, कंट्रोल ऑफ एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है फॉल, ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर रहा लेकिन लॉस ऑफ टिश्यू को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल्स एब्सिशन ऑफ व्हाट? प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव, premature fall of flower, premature fall of fruit. Premature fall of flower क्यों इंपॉर्टेंट है? ये मैंने आपको क्लास में बताया था, ये सारे लोग क्लास में थे और दोनों क्लासेस में बताया था। premature fall of flowers का क्या मतलब है? जल्दी से बताएं, टाइम नहीं है। premature fall of flowers का क्या मतलब है बेटा? जल्दी से बताएं आंसर, आगे चलते हैं। फिर कहां पर बनता है आपके पास जो इथाइलिन है? Premature fall of flowers, मुझे बताएं, what do we mean by premature fall of flowers? Ethylene is produced in the leaves, it is produced in the stem, it is produced in the young fruits. First year medical, please start thinking and start giving me answers quickly beta. Where are you people sleeping? Next आपके पास है abscisic acid. Abscisic acid क्या है? Suppression of bud growth. Now this is inhibitory in nature. ठीक है, suppression, yes, when the flower falls off as a bud instead of developing into a flower, that is before blooming. Before blooming, if we say before fertilization, I think it is better. ठीक है, because the flower it withers off after fertilization. लेकिन if it falls off before fertilization, and yes before blooming also it's okay, because if it falls before the bloom, fertilization फिर नहीं होगी फिर। ठीक है, करेक्ट आंसर है बेटा आपका। So abscisic acid has suppression of bud growth, important role in stomatal opening, promotion of leaf senescence. Suppression of bud growth, buds को dormant रखता है। आप लोग दोबारा क्लास ज्वाइन करेंगे। Stomatal opening and closing में है, promotion of leaf senescence के अंदर it helps in the fall of the leaves senescence. कहाँ पर बनता है? Mature leaves में बनता है, fruits में बनता है, root caps में बनता है। ठीक है, 5 मिनट के लिए आप लोग क्लास में वापस आएंगे दोबारा से बेटा। ठीक है, बिकॉज आई जस्ट नीड 5 मिनट्स। हम इनका एक दफा पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद आई विल लीव यू पीपल फॉर द